हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में। आज की वीडियो द प्यूरिटन मूवमेंट और इसके चेंजिंग आइडियल्स पर आधारित है। आपको बता दें, इंग्लैंड में दो धर्मों का आपस में ही संघर्ष चलता रहा। एक रोमन कैथोलिक धर्म है और दूसरा प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक धर्म जब रोम का इंग्लैंड पर शासन हुआ करता था, तब रोमन लोगों ने अपना ही धर्म रोमन कैथोलिक धर्म के नाम से यहाँ पर स्थापित किया था। और वही धर्म जो चर्च इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड में उसे चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूप में जाना गया था। रोमन कैथोलिक धर्म जीसस क्राइस्ट का विरोध करते थे, गॉड नहीं मानते थे, उनकी पूजा नहीं किया करते थे और क्रिसमस डे मनाने का भी उनके धर्म में प्रावधान नहीं था। जो भी मनाता था उसको जेल भेज दिया जाता था या तो मार दिया जाता था। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया और वो चाहते थे कि रोमन कैथोलिक धर्म पूरी तरह से चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड से दूर हो जाए और प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव पड़ जाए। इसी के चलते राजा हेनरी अष्टम ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को अलग कर दिया था। 1534 में इंग्लैंड रोमन कैथोलिक धर्म से अलग हो गया और एडवर्ड सिक्स्थ जो 1547 से 1553 के तहत प्रोटेस्टेंटवाद का कारण तेजी से बढ़ा। क्वीन मैरी का शासन आया 1553 से 1558 के शासनकाल के दौरान। इंग्लैंड रोमन कैथोलिक धर्म फिर से वापस आ गया और कई प्रोटेस्टेंट को भागने में मजबूर होना पड़ा। इस अनुभव से एलिजाबेथ का शासन आया। एलिजाबेथ ने प्रोटेस्टेंट को उत्साहपूर्वक स्वागत किया और अपने देश पुनः बुला लिया। एलिजाबेथ ने 1559 में धार्मिक समझौता किया और इस धार्मिक समझौते में ये माना गया कि रोमन कैथोलिक धर्म यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट धर्म के साथ ही साथ चलेगा। एलिजाबेथ के शासनकाल जो 1558 से 1603 के शासनकाल के दौरान चर्च ऑफ इंग्लैंड को व्यापक रूप से एक सुधारित चर्च जो प्रोटेस्टेंट चर्च के नाम से जाना गया था। स्कॉटलैंड में कैल्विनिस्ट जेम्स सिक्स्थ एक थे जो एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद इंग्लैंड आए और राजा बन गए थे। जब वो इंग्लैंड में आए और राजा बने तो उनका नाम जेम्स फर्स्ट बोला गया। 1604 में हैम्पटन कोर्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्यूरिटन की एक नॉट अ बिशप नॉट अ किंग के रूप में वाक्यांश को खारिज कर दिया, प्यूरिटन को दबाव बना दिया था। इसी बीच क्या होता है, इससे पहले कि इंग्लैंड की दो लोकप्रिय प्रकाशित पुस्तकें हुई थीं जो एलिजाबेथ के समय में आई थी, द जेनेवा बाइबल और जॉन फॉक्स की बुक ऑफ मार्टर, जिसने अंग्रेजी प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड को एक चुने हुए राष्ट्र के रूप में देखने का औचित्य प्रदान किया, जिसे सुधार के कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर के द्वारा चुना गया माना गया था। लेकिन उसके बाद जो जेम्स फर्स्ट राजा बने तो उन्होंने प्यूरिटन को पूरी तरह से दबा दिया। प्यूरिटन भावना धीरे धीरे फैलती तो रही। 1640 के दशक में संसद और चार्ल्स फर्स्ट के बीच एक सिविल वार हुआ, जो प्यूरिटन ने संसद और राष्ट्र से गॉड के साथ अपनी बातचीत को और अपने ध्यान को, अपने भावनाओं को नवीनीकृत करने का आग्रह करने का अवसर दिया, लेकिन वह अवसर मना कर दिया गया। यही धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म यानी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बढ़ता रहा। कई तरह की क्रांतियाँ हुई, लेख लिखे गए। इस तरीके से उन्होंने फिर अपने प्रोटेस्टेंट धर्म को लागू ही कर लिया जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे। कहते हैं कि अंग्रेजी प्यूरिटन ने शानदार क्रांति के दौरान एक व्यापक चर्च के अपने आदर्श को सुरक्षित रखने का अंतिम प्रयास किया था, जो 1689 में किया था। उनका मानना था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है। वह लोग क्रिसमस डे और जीसस क्राइस्ट को गॉड के रूप में नहीं मानते और उन्हें अपने प्रोटेस्टेंट धर्म को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इस तरह की भावनाएं उन लोगों में व्याप्त थीं जो प्रोटेस्टेंट धर्म के फॉलोवर्स थे। फिर प्यूरिटनवाद ने अंग्रेजी और शुरुआती अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन में प्रोटेक्टोरेट और न्यू इंग्लैंड के शुरुआती निपटान में निपटाया। चलते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, नोट करते रहें। द प्यूरिटन मूवमेंट, कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर आधारित होते हैं, उनमें प्रोटेस्टेंट धर्म और प्यूरिटन मूवमेंट के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाता है। द प्यूरिटन मूवमेंट may be regarded as a second and a greater renaissance, a worth of the moral nature of man following the intellectual awakening of Europe in the 15th and 16th century. Second Renaissance माना जाता है। In Italy, whose influence had been uppermost in Elizabethan literature, the Renaissance had been essentially pagan and sensuous. It had hardly touched the moral nature of man, and it brought little itself from the dystopian of ruler. One can hardly read the horrible records of the Medici
or the Borgias, or the political observations of Machiavelli, without marveling at the moral and political degradation of cultural nation. In the north, especially among the German and English people, the Renaissance was accompanied by a moral awakening, and it is precisely that awakening in England, that greatest moral and political reform which ever swept over a nation in the short space of half a century. Next, the two chief objects. The first was personal righteousness, and the second was civil and religious liberty. In other words, it aimed to make men honest and to make them free. Such a movement should be cleared of all the misconceptions which have clung to it since the Restoration, when the very name of Puritan was made ridiculous by the jeers of the gay countries of Charles II. Courtiers of Charles II. Though the spirit of the movement and profoundly religious, the Puritans were not a religious sect. Neither was the Puritan a narrow-minded and a gloomy dogmatist. The Puritans, as he is still pictured even in the histories. Thomas Hooker in Connecticut gave to the world the first written constitution in which free men, before electing their officers, laid down the strict limits of the offices to which they were elected. From a religious viewpoint, Puritanism included all shades of belief. The name was first given to those who advocated certain changes in the form of worship of the Reformed English Church under Elizabeth. But as the ideal of liberty rose in man's mind and opposed to it were the king and his evil counselor and the band of insolent churchmen, of whom William Laud is a great example, then Puritanism became a great national movement. It included English churchmen as well as extreme separatists, Calvinists, Covenanters, Catholic noblemen, all bound together in a Renaissance to despotism in church and state, and with a passion for liberty and righteousness such as the world has ever since seen. In the term of Puritanism under Cromwell, severe laws were passed, many simple pleasures were forbidden, and an austere standard of living was forced upon an unwilling people. Oliver Cromwell ruled England during this age, which is also called the Age of Milton, 1649 to 1660. It was a Puritan-dominated age, and they lived by strict moral and religious codes. They banned all the activities considered to be obscene and licentious. Puritans were also called son of John Calvin, yaad rakhna, son of John Calvin, and they wanted complete purification of the Catholic Church of England. The Civil War took place from 1642 to 1651. The supporters of King Charles I was called the Cavaliers. याद रखना, supporters of Charles I was called Cavaliers, while that of Oliver Cromwell were called the Roundheads. Oliver Cromwell के जो supporters थे वो Roundheads और Charles I के supporters Cavaliers. The Civil War ended in 1651 with the execution of Charles I and Oliver Cromwell coming into power. As a result of the clash between church and court, theatres were shut, and there was no production of drama. There was no production of drama which was considered to be obscene. The Puritan writers are John Milton, Richard Baxter, Anne Bradstreet, John Bunyan, John Dryden, Edward Taylor, Robert Burton, Isaac Walton, Sir Thomas Browne, and Thomas Fuller. The criticism is made that the wild outbreak of immorality which followed the restoration of Charles was partly due to the unnatural restrictions of the Puritan era. Next point, changing ideals. It is important
changing ideals of Puritan age or Puritan movement. The political upheaval of the period is summed up in the terrible struggle between the king and parliament, which resulted in the death of Charles at the block and the establishment of the Commonwealth under Cromwell. The English people had been wonderfully loyal to their sovereigns, but deeper than their loyalty to kings was the old Saxon love for personal liberty. Next point. In the days of Alfred and Elizabeth, the king ideals went hand in hand, but more often they were in open strife, and a final struggle for supremacy was inevitable. Next point, the crisis came when James I, who had received the right of royalty from an act of parliament, began by the assumption of divine right to ignore the parliament which had created him. The year of James I coming in England, 1603. Next point, the Civil War was followed in the reign of Charles I. And of the trump of English freedom, it is unnecessary to write here. Next, ideal, religious ideal. That is important for the ideals, changing ideals of Puritan movement. The religious ideal ही है जो Puritan movement का changing ideal के रूप में आए. Religiously, the age was one of even greater ferment than that which marked the beginning of the Reformation. A great deal of a national church was pounding to pieces like ideals ships in the breakers, and in the confusion of such an honor, or the action of the various sects was like that of frantic passengers, each striving to save his positions from the wreck. Next point, the Catholic Church, as its name implies, has always held true to the ideal of a united church. The church used to, like the great Roman government of the early centuries, brought the splendor and authority of Rome to bear upon the humblest village church to the farthest ends of the earth. For a time, that mighty ideal dazzled the German and English reformers. The possibility of a united Protestant church perished with Elizabeth. Elizabeth के ही साथ समाप्त हो जाती है. The worldwide church was the ideal of Catholicism, came the ideal of a purely national Protestantism. Charles called Irish rebels and Scotch Highlanders to his aid by promising to restore their national religious, and that the English Puritans, turning to Scotland for help, entered into the solemn Covenant of 1643, establishing a national Presbyterianism whose object was, उद्देश्य था, to bring the churches of God in the three kingdoms to uniformity in religion and government, to preserve the rights of parliament and the liberties of the kingdom, that we and our posterity may be brethren. Live in faith and love, means live in faith and love, and the Lord may delight to live in the midst of us. Years passed, years of bitter struggle and heartache before the impossibility of uniting the various Protestant sects was generally recognized. The ideal of a national church died hard and to its death into all the religious unrest of the period. The national ideal and the struggle cast the amazing life and work of Bunyan, or appreciate the heroic spirit of the American colonist, and left home for wilderness in order to give the new ideal of a free church in a free state its practical demonstration. इसी तरह से समुदाय की स्थापना के माध्यम से पवित्र राष्ट्रमंडल को साकार करने का प्यूरिटन आदर्श आगे बढ़ता रहा, और अमेरिकी उपनिवेशवादी जो परंपरा आई, सबसे बड़ा अवसर आया इंग्लैंड में और न्यू इंग्लैंड के रूप में जाना गया. बताते हैं, न्यू इंग्लैंड में प्यूरिटन कॉलोनीज ने संयुक्त रूप से चर्च के संगठन को अपनाया था.
न्यू इंग्लैंड के प्यूरिटन्स ने चर्च के ढांचे के अनुसार नागरिक राष्ट्रमंडल का निर्माण किया। केवल चुने हुए लोग ही वोट दे सकते थे और शासन कर सकते थे।